sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Morning, good morning. Ayushi. Yes, sir. What does Ayushi mean? Beta? Sir, one who has a long life. Huh? जिसके सर आयु ज्यादा हो. अच्छा. So you're a graduate of Patna Women's College. Yes, sir. You work with Central Bank of India. Yes, sir. Why do we need public sector banks? We do have a private sector banks like ICICI, HDFC. Why do we need public sector banks in the first place? सर पब्लिक सेक्टर बैंक का होना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अगर हम प्राइवेट बैंक की बात करें तो वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे बस ध्यान देगी. तो जो फाइनेंशियल इंक्लूजन एक गवर्नमेंट का एम है वो इंटीरियर ऑफ द इंडिया पे भी जाना जरूरी है. फाइनेंशियल क्या एम है? फाइनेंशियल इंक्लूजन. इंक्लूजन. यस सर. What does it mean? सर ग्रासरूट लेवल के सर लोगों को सर बैंकिंग हैबिट्स सर फाइनेंशियल हैबिट्स से सर जोड़ना, जैसे उनके जनधन जो I get it now. You go ahead. Give him the answer. Have you heard about Bank Board of Bureau? यस सर. What is Bank Board of Bureau? सर बैंक बोर्ड ऑफ ब्यूरो एक ऑटोनॉमस बॉडी है जिसको बनाया गया था कि जो भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स में जो हाई अथॉरिटी जो पोजीशंस है उसमें वो अपॉइंटमेंट करती है सर. Who is the CMD of the Central Bank of India at present? सर एम वेंकट राव. What is the stake of the government of India in the Central Bank of India? सर अराउंड 51% सर. My question is, already you are serving the society in the best possible manner. Why you want to join Bihar Police Service or Bihar Education Service? What difference it is going to make? सर अभी सर मेरा जो जॉब है वो एक बैंक में है, बट अगर हम बीपीएससी के एक मेंबर बिहार पुलिस सर्विस में अगर हम ज्वाइन करते हैं तो मेरे पास एक डाइवर्स जॉब प्रोफाइल होगा. उसमें सर हम ज़्यादा बेटर सर्व कर सकेंगे, ज़्यादा कंट्रीब्यूशन मेरा हो सकेगा सर बिहार के सर डेवलपमेंट में सर. अभी क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो अभी बिहार का कितना है? क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो सर 51.5% सर. आर यू श्योर? सर सॉरी सर exact sir I don't It is know. 55.6%. Okay sir, sorry sir. What if the credit deposit ratio of Bihar is more? What impact it will have? सर क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो से होता ये है कि बैंक कितनी लेंडिंग करती है ऑन द बेसिस ऑफ इट्स क्रेडिट. तो अगर वो हाई क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो होता है इसका मतलब होता है कि बैंक लेंडिंग कर रही है, तो हमारी सोसाइटी में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, इन्वेस्टमेंट हो रहा है, और सर इससे ग्रोथ का एक इंडिकेटर होता है सर अगर हमारा क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो सर हाई रहेगा तो. The states like Andhra Pradesh, Tamil Nadu have a credit deposit ratio of 146%, 178%, but Bihar is having a credit deposit ratio of 55.6%. What is the main reason behind this? Why the banks are reluctant to give loan to the people of Bihar basically? This is what the credit deposit ratio means, right? Yes sir. Why the banks are reluctant to give loan to the people of Bihar? सर बिहार का जो पॉपुलेशन है उस पे अराउंड 33% पॉपुलेशन सर पॉवर्टी स्ट्रिकन है. तो इस वजह से सर जो सिक्योरिटी होती है, कोलेटरल होता है, बैंक का जो लोन होता है वो एनपीए होने का भी सर चांसेस ज्यादा होता है. और सर बिहार में क्या होने का बेटा? एनपीए सर. अच्छा. What is the non-NPA? नॉन परफॉर्मिंग एसेट सर. I'm clueless about what it means. जो भी सर जब हम लोन देते हैं तो उनमें अगर 90 डेज तक इंटरेस्ट पेड अप नहीं हम कर पाते हैं तो वो सर एनपीए बन जाती है, तो वो बैंक के लिए एक लॉस की तरह हो जाती है. Answer his question. Yes sir. But the question is, the NPA of Bihar is not more than the national NPA of the country. Yes sir. So this logic doesn't hold water. The NPA rate of the Bihar is similar to the national average, but still the banks are reluctant to pay loan to the people of the Bihar. Say the deposit is 100 rupees, the banks lend 55 rupees to the people of the Bihar. That 45 rupees goes to the other state. Why so? Despite the fact that the NPA of the Bihar is similar to the national average. सर बिहार में सर इन्वेस्टमेंट की भी सर कमी है सर. अच्छा, मुझे आप ये बताइए, अब बिहार सरकार की कौन सी ऐसी नीति है जिससे आपको लगता है कि महिला सशक्तिकरण की तरफ बहुत एक अच्छा पहल है? सर अभी बिहार सरकार का महिला उद्यमी योजना है जिसमें सरकार 10 लाख लोन प्रोवाइड कर रही है स्टार्टअप के लिए. उसमें 5 लाख है वो ग्रांट इन एड के तौर पे दिया जा रहा है और 5 लाख इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जा रहा है. उसके बाद विमेन की हायर एजुकेशन के लिए कन्या उत्थान योजना है. फिर सर सिविल सेवा प्रोत्साहन राशि भी बिहार सरकार प्रोवाइड कर रही है.
और बिहार में से जो जीविका प्रोग्राम है वो विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को स्ट्रेंथन कर रहे हैं सर। क्या आपको लगता है कि बिहार एक पहला ऐसा राज्य है जिसने महिलाओं को रिजर्वेशन दिया है? Yes. Is reservation a tool of empowerment? Yes sir, of course. But there is a concept of a sarpanchpati. The government of the Bihar is giving reservation to the women. ये मुखिया पति पहले मुखियापति, सरपंचपति. This defeats the whole objective of the women empowerment. सर इसके लिए हमें जरूरी है कि हमें विमेन को उनके राइट्स को लेके एजुकेट करना है कि अगर वो पावर होल्ड करती है तो उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस पावर को। Suppose you've been made the chief minister of Bihar, Yes. and you have been given only 10 days time to work as chief minister. What is it that you will do which will revolutionize the condition of women in India, in Bihar? Take a minute and think about it. सर स्किल डेवलपमेंट सर ट्रेनिंग से विमेन को जो Sorry? स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग से सर विमेन को जो In 10 days, what skill will you give the women? 10 days. सर फाइनेंशियल सर एड What kind of financial aid? 10,000, 1 lakh, 5,000. नो सर सर अराउंड 25,000 सर एड जिससे वो बेसिक जो विमेन को सर जैसे स्टिचिंग होता है ये एक बेसिक स्किल है वो विमेन को आता है बट उनको ऑर्गेनाइज करने की जरूरत है कि वो मार्केट से सर जुड़ सके जैसे हैंडीक्राफ्ट ये बेसिक। देखो बेटा तुम मैकेनिकली आंसर दे रही हो। And I said you take your time and give me an answer. सर हम सर विमेन को सर एजुकेट कर सकते हैं सर कि बिहार में ऑलरेडी उनके लिए बहुत सारे सर स्कीम्स ऑलरेडी गवर्नमेंट लाई हुई है बट उनको उनकी जागरूकता नहीं है सर उस बारे में तो अवेयरनेस कैंपेन सर हम जागरूकता नहीं है। यस क्यों नहीं है जागरूकता? सर विमेन में सर बिहार में सर विमेन में लिटरेसी का प्रॉब्लम है सर। हाँ, women लिटरेसी illiteracy. यस सर और सर विमेन का Only जो women. वर्कफोर्स Men in Bihar are not illiterate. Sir, they are sir, but as compared to sir, women have more illiterate population. और सर women का सर जो labor force participation है वो भी कम है. Educated women are also. So if I were in your place, let me tell you how I would like to answer this question. Okay, and you have only 10 days time. Yes. So you were trying to race and catch up with time and try and give an answer. मतलब तुम ये कह रही हो कि हम कोई उत्तर देंगे 10 मिनट में हम उत्तर देंगे, लेकिन इसका उत्तर संभव नहीं है ना 10 मिनट में। अगर एक उत्तर संभव है वो ये है कि 10 दिनों के लिए मैं चीफ मिनिस्टर हूं तो मेरे पावर्स में जो भी लेजिस्लेशन संभव होगा या लॉ बनाना संभव होगा जिससे कि विमेन का एम्पावरमेंट हो सके वो मैं लॉ लाऊंगी, है ना। यू आर एंटरिंग द सिविल सर्विसेज सो यू मस्ट नो व्हाट इज द पावर ऑफ लेजिस्लेशन, है ना। तो अब क्या लॉ लाएंगे आई कांट से राइट नाउ। You have to be honest. Don't think that if you say, I don't know what exactly will, adversely impact your performance or your rating. You don't have to say that, Try and stand at a slightly different footing from the normal run-of-the-mill answers which people give. All right? You get what I mean? Yes. You studied in Patna Women's College. I'm sure your teachers must have taught you about this, right? If I am chairing the board, even if you don't give me the correct answer, if your stance is correct, I would give you more marks than somebody else who's just given the correct answer in a wishy-washy manner. You understand? Yes. You must remember this as the clue to being rated better than other people. Understood? Yes. And you do it. What is one quality because of you the board shall hire you or the state public commission shall hire you? What is the one quality? Sir, discipline.
Can you substantiate? Can you give some example that you are very disciplined? Sir, it may be a small example, but because of discipline, I've been punctual my whole life in everywhere that I go and I do. Because of what? डिसिप्लिन सर, पंक्चुअल सर अपने लाइफ में सर रहे हैं सर, तो सर वो टाइम मैनेजमेंट भी सर एक अच्छे तरीके से सर आता है सर. What is your one demerit which you should work upon? सर इमोशनल, आई एम अ बिट सर इमोशनल पर्सन सर. But emotional intelligence is much needed when you are in administrative service. Yes sir, but controlled emotion sir. But sometimes the emotions get overwhelming. So sir, I need to work on controlling my emotion in the right direction sir. So, do you read newspapers? What's your name? Ayushi. Ayushi, huh? Yes. You read newspaper? Yes. What is right now the most current news, most important news for India? So one nation, one election. So That's the not cabinet. news. That's not news. One nation, one election is not news. It has been on for quite some time. So, What is the newspaper report? What is the most important newspaper report in the last 1 or 2 days? so related to this news only, cabinet committee has passed this in its meeting and it's about to bring it in winter That session. happened 3 days back. Yes sir. Sir recently, sir today sir I read जो वाटर लेवल है वो पुनपुन सोन और गंडक का वाटर लेवल से राइज हुआ है, उस वजह से बिहार के सर कुछ क्षेत्र में सर बाढ़ की स्थिति हुई है. और इसका रीजन ये बताया जा रहा है कि नेपाल, झारखंड, यूपी यहाँ पे बारिश ज्यादा हुई है, इस वजह से सर वाटर लेवल राइज हुआ है सर. और वर्ल्ड अफेयर्स के बारे में पढ़ती हो न्यूज़पेपर्स में? यस सर. पढ़ती हो तो क्या पढ़ती हो? व्हाट इज योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट? सर अभी तो सर वही इजराइल, अभी तो सर वही इजराइल का जो अटैक हुआ था, पेजर अटैक, उसके बारे में सर पढ़ा है सर. हिजबुल्लाह ग्रुप का सर. क्या अटैक हुआ था? सर उनका जो वो पेजर और वॉकी टॉकी है वो ब्लास्ट हुआ था. किनका पेजर हो? सर हिजबुल्लाह ग्रुप का जो लेबनान से है सर. तो उसमें सर इजराइल का सर हाथ बताया जा रहा है. तो सर इससे रिलेटेड ये डेवलपमेंट का था कि हम लोग टेक्नोलॉजी को एक लिमिटेड और एक वेल ऑर्गेनाइज मैनर में हमें यूज करना चाहिए, क्योंकि बहुत अनप्रेडिक्टेबिलिटी ला देता है कि अगर हम वॉकी टॉकी या फिर पेजर जो उतना वेल कनेक्टेड इंटरनेट से नहीं है उनको हैक किया जा सकता है. तो सर मोबाइल जो है तो वो तो तुम सर इंजीनियरिंग पढ़ी हो क्या? नहीं, क्या पढ़ी हो? इकोनॉमिक्स पढ़ी हो. बोलो. तो सर उससे रिलेटेड सर यही था कि ऐसे फिर सर एक अनसर्टेनिटी टेक्नोलॉजी को लेके सर हर जगह सर आ जाएगी और एक ट्रस्ट जो है. तो ये पेजर हिजबुल्लाह के पेजर्स ब्लास्ट हो गए? यस सर. हिजबुल्लाह वालों के? यस हिजबुल्लाह. तो कैसे ब्लास्ट हुए? वही टेक्नोलॉजी के कारण? सर उसको हैक किया गया था सर, वो जो पेजर इजरायलीज ने हैक कर दिया. किसने हैक किया? सर न्यूज में ऐसे सर रिपोर्ट आए हैं कि ये लगाया जा रहा है क्या कि मतलब इजरायली ग्रुप ने सर. इजरायलीज नहीं किया ना? यस सर. यस सर. ये हिजबुल्लाह जो है क्या है? व्हाट इज हिजबुल्लाह? सर ये एक ऑर्गेनाइजेशन है सर वहाँ का. वो अभी एंटी इजराइल सर उसका कैंपेन सर चल रहा है. क्या? एंटी इजराइल सर. अच्छा, अभी चल रहा है? नो सर, फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम सर. From a long time or for a long time? Sorry sir, for a long time. So, why is Hezbollah against Israel? Sir, because of Palestine issue, sir. Israel और पैलेस्टीन का सर काफी टाइम से सर एक. Alright. So what is the main issue related to Palestine? What is the Palestine issue? Sir, actually sir 1948 में इजराइल को वहां पे सर स्थापित किया गया था आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर. क्या किया गया था? वहां पे सर उनको सेटल किया गया था. किसको?
ज्यूइश पीपल को इन इजराइल। तो वहां पे सर पैलेस्टीन के सर एरियाज को ऐसे डिवाइड किया गया था कि वहां पे एक सर वॉर लाइक सिचुएशन होना सर इट्स समथिंग विच इज इनएविटेबल, क्योंकि और इजराइल अपना एक्सपेंशन करना चाहता है वहां पे। तो सर वहां पे टू स्टेट पॉलिसीज जो है जिसको सर इंडिया सर इस्टेब्लिश करना चाहती है, बट इजराइल वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप को भी सर रिक्वायर करना चाहता है। तो ये वॉर लाइक सिचुएशन सर वहां पे बनी रहती है सर। So it was inbuilt in the whole, in the way that Israel was created, it was inbuilt, the situation of war coming up from time to time. Is that what you're saying? Yes sir, the location and the way sir Israel was created. Sir, the location in which it was sir created. So who do you think was majorly responsible for this? For creating this kind of situation? Sir, Britain. Very good. So now if I ask you, apart from Hezbollah, what are the other organizations which are, which swear their lives against Israel? So one is Hamas. Hamas. Who Hamas is supported by? Who supports Hamas? सर रिसेंटली सर ईरान की तरफ से भी सपोर्ट हमास को प्रोवाइड किया गया है सर। तो हिजबुल्लाह भी तो ईरान ही सपोर्ट करता है। यस हाँ? What is the difference between Hezbollah and Hamas? Sir, Hamas. Sir, sorry, sir. Hamas is an organization which is sir actively in. This I'll forget about all that. Tell me one thing. Since we are there in West Asia and Israel and I'm reading this book. Okay, I give you a hint. This gentleman is a Libyan writer, Hisham Matar. He lives in England. He's a Libyan writer. Okay. I'll just read out one small paragraph from this. You will have to tell me what he's writing about. It's an extremely important event in the Western, in that part of the world, which is, West Asia and North Africa. Okay. Shall I read it? Sir, huh? I'll try, sir. Over the next few days, I held on silently to my hopes, observing every turn in events. Cairo's Tahrir Square was packed with protesters, and it looked like there was no way now that the tide could be turned. Once, in between classes, I locked myself in one of the school toilet cubicles and cried into my hands, praying no one could hear, praying. Suddenly I was now praying for the end of tyranny, a word that no longer abstract, no longer for slogans alone, but an intimate offense. What is he talking about? Sorry, sir. There were very palpable hints. Cairo's Tahrir Square and have you heard of this thing called the Arab Spring? Have you heard of the Arab Spring? Yes, I've heard, but sir, अभी सर उतने अच्छे से सर नहीं सुना है, मतलब मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। Yes. Anyway, और क्या है? What is your interest in current affairs? सर अभी सर फेडरल बैंक ऑफ अमेरिका ने अपने इंटरेस्ट रेट को 50 बेसिस पॉइंट से सर कम किया है, तो इससे सर इंडियन शेयर मार्केट में भी काफी उछाल आया है सर।
और इससे ये स्पेक्यूलेट किया जा रहा है कि इंडिया में भी जो रेपो रेट है उसमें शायद थोड़े बदलाव किए जाएं सर, शायद थोड़े बदलाव किए जाएं। चलो ठीक है। अभी सर ने इजराइल की बात की, मोसाद क्या है? हैव यू हर्ड अबाउट मोसाद? मोसाद इज एन इंटेलिजेंस ग्रुप ऑफ सर इजराइल। क्या उसी ने पेजर ब्लास्ट करवाया? यस सर, द सोर्सेस से दैट सर। हाउथी क्या है? हाउथी रिबल्स। You talked recently. You talked about repo rate. What is a repo rate? Sir, repo rate is the rate at which RBI provide funds to the commercial banks, sir. What is a commercial bank? What is a scheduled commercial banks? Sir, scheduled commercial banks are the banks which are mentioned in the Section 2 of RBI Act 1934, and they are proposed with the activity of lending, borrowing, and all other said financial activities. Who decides the repo rate? Sir, Monetary Policy Committee. Who is the chairman of the Monetary Policy Committee at present? Shaktikant Das. RBI governor? Yes, sir. How many members do we have in the Monetary Policy Committee? Sir, 6 members. Are you sure enough? What happens if there is a tie? See, there are 6 members in the Monetary Policy Committee. What if 3 members say that repo rate shall increase? 3 members are of this view that repo rate shall decrease. Then what will happen in that scenario? Sir, then the RBI governor does a casting vote, sir. Very good. Thank you so much, sir. Thank you, sir. ठीक है, जाओ बेटा।